गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडियन पैनोरामा। तो 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इंडियन पैनोरामा जो है उसके लिए जो है एंट्रीज मांगी है कि कौन कौन सी फीचर या नॉन फीचर फिल्म्स उसके लिए जो है वो नॉमिनेट होना चाहती हैं। तो इंडियन पैनोरामा क्या होता है? 1978 से जो हमारा IFFI है, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये ऐसी फिल्म्स को प्रमोट कर रहा है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, जो हमारे रिच कल्चर और हेरिटेज को जो है वो दिखाती हैं। तो इस साल की जो है वो एंट्रीज मांगी गई हैं और ये फीचर फिल्म्स जो होंगी इनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जो इंडिया में होते हैं वहाँ पर भी और जो अब्रॉड में होते हैं वहाँ पर भी दिखाया जाएगा। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। 52nd इंडियन पैनोरामा। So 52nd International Film Festival of India, they have announced call for entries for Indian Panorama 2021. So since 1978, it's a part of IFFI, and IFFI calls for feature and non-feature films to get themselves nominated. And if these films basically represent the culture and rich culture and heritage of India, and these films are showcased in international film festivals which are conducted both in India and abroad. They are shown outside India also, like our embassies, etc. They also conduct some showcase of movies. So any movies, all these movies which are showcasing our culture, these movies are shown outside India also. Okay, so now let us see the next topic, which is vintage motor vehicles. तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, उन्होंने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को अमेंड कर दिया है। और अब जो है विंटेज मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, पुरानी कार, पुरानी जो आपके व्हीकल हैं, उनको जो है उनकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को थोड़ा सिंपल कर दिया है। ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एक अब नंबर जो होता है, जैसे आपकी कार का नंबर होगा कुछ DL या HR, ठीक है, तो उसके आगे जो है वो सीरीज़ में VA जुड़ जाएगा। VA मतलब जो विंटेज मोटर व्हीकल्स होंगे उनको VA सीरीज़ के नंबर मिलेंगे। ठीक है। जैसे अगर आपका दिल्ली का कोई विंटेज मॉडल है तो आपकी उस विंटेज कार का नंबर होगा DL, फिर आगे VA और आगे जो नंबर होता है वो नॉर्मल नंबर होगा। ठीक है। तो अब ये हुआ क्या है कि इसमें डिफाइन भी किया है कि कौन कौन सी कार्स या जो व्हीकल हैं वो कौन कौन से जो है वो विंटेज हैं, जो 50 साल से पुराने हैं और उनमें कोई बहुत बड़ा ओवरहॉल नहीं किया गया है, जैसे कि उनका कोई इंजन चेंज नहीं हुआ है या कुछ भी बहुत कोई मेजर ओवरहॉल उनमें नहीं हुआ है, उन सबको विंटेज मोटर व्हीकल्स की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है। तो जो तो ऑलरेडी रजिस्टर हैं उनकी जो है री रजिस्ट्रेशन जो होती है वो भी सिंप्लीफाई कर दी गई है, और जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है उनको न्यू को रजिस्टर कराना है तो उसके लिए भी प्रोसेस जो है वो सिंपल कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मल लगते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, फ़ी, बिल ऑफ एंट्री, अगर वो इंपोर्ट की गई है तो ये सारी चीज़ें लगेंगी, और जो है विंटेज मोटर व्हीकल्स को आप रजिस्टर कर सकते हो। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि विंटेज मोटर व्हीकल्स को रजिस्टर तो कर सकते हो, लेकिन उसको आप चला नहीं सकते, ना रेगुलर या कमर्शियल पर्पज़, किसी के लिए पर्पज़ के लिए आप उसको रोड्स पे नहीं चला सकते। ठीक है। सिर्फ घर पे सजाने के लिए, घर पे रखने के लिए उसकी आप रजिस्ट्रेशन अगर कराना चाहते हो तो आप उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ओके, सो now let us see this topic in English. Vintage motor vehicles. So the Ministry of Road Transport and Highways, they have amended this central motor vehicle rules 1989 so that they can formalize the registration process of vintage motor vehicles. So this registration process has also defined what is a vintage motor vehicle. So any 2 or 4 wheeler which is more than 50 years old and it has not undergone any substantial overhaul, it will be defined as a vintage motor vehicle, and they will have a unique registration mark of VA series. Okay, so in case you have a vintage motor vehicle in Delhi, then your number will be something like that, DL VA, and the number the 4-digit number that you see in general. Okay, so the important point for us to remember in this topic is that these vintage motor vehicles will not be allowed to run on the roads, neither for regular purpose nor for commercial purpose. So you just have to keep them at your house just for vintage purpose basically. So you just if you want to get registered, if you want them to get registered, so that you want to have a formalized engagement with that vehicle, so you can get them registered but you cannot drive them. Okay, so now let us see the next topic, which is curbs on foreign card firms. तो आपको पता है ना, RBI ने अभी जो है
मास्टर कार्ड को जो है वो बैन कर दिया कि वो न्यू कार्ड्स नहीं इशू कर सकता है इंडिया में। तो अभी ऐसे ही रिसेंटली अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब जो है इनके कार्ड्स को भी जो है वो अप्रैल में ही जो है वो बैन किया हुआ है कि वो अब न्यू कस्टमर जो है वो उनको कार्ड्स इशू नहीं कर सकते। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है आरबीआई ने, जो है 2018 में एक सर्कुलर निकाला था और कहा था कि जो भी ये पेमेंट कंपनीज़ हैं जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे हमारा इंडिया का है जो, या जितने भी हैं, इन सबको अपना जो ये पेमेंट्स का डेटा है उसकी स्टोरेज जो है वो इंडिया में ही करनी है। तो जिन्होंने तो कर लिया ये इसको कंप्लाई, उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन आरबीआई ने जो ये जैसे मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब, इन सब ने कंप्लाई नहीं किया तो इनको जो है वो बैन लगा दिया कुछ टाइम के लिए, जब तक ये कंप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो आरबीआई की गाइडलाइंस कहती क्या है? आरबीआई की गाइडलाइंस ये 2018 में लिखी थी और कहा था कि जितना भी आपका डेटा है जो इंडिया की पेमेंट्स से रिलेटेड है वो सब इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। और जो आप डेटा स्टोर करोगे इंडिया में, तो जो सर्ट इन जो है, आपको पता है ना हमारी जो साइबर सिक्योरिटी जो एक नोडल एजेंसी है उसकी, तो उनके इम्पैनल्ड कोई ऑडिटर उसको जो है वो सिस्टम को आपके ऑडिट भी करेगा कि आपका जो ये सिस्टम है वो कितना सिक्योर है। ठीक है, अब ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि लोगों की पेमेंट सिक्योर रहें। फिर जो है क्रेडिट कार्ड फर्म्स जो थी या डेबिट कार्ड फर्म्स जो थी, इन्होंने इसको रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं, इंडिया में स्टोरेज करते हैं, तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। क्या होता है कि ये इनका सब कुछ सेंट्रलाइज्ड डेटा है, समझ लो अमेरिका में है सर्वर्स इनके, अगर इंडिया में इनको शिफ्ट करना है तो इनको यहाँ पर सर्वर्स बनाने पड़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये इंडिया में कर देंगे तो सारी कंट्रीज इनको धीरे धीरे कहेंगे कि आप हमारी कंट्री में भी करो, क्योंकि आपने इंडिया में भी तो किया है, तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये डेटा लोकलाइजेशन के लिए इसलिए रेजिस्ट कर रही हैं। और जो है इनको ये भी लग रहा है कि जो लोकल कंपनीज़ हैं, जैसे हमारे जो रूपे है, जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादा प्रेशर कर रही हैं गवर्नमेंट को कि इस तरीके से इनको आप जो है वो टैकल करो, यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन की डिमांड करो। ठीक है, तो ये इसलिए जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ, आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब थे तो उन्होंने जो है कहा भी था कि ये डिमांड है डाटा लोकलाइजेशन की इंडिया के द्वारा, हमारी मास्टर कार्ड और वीज़ा को हार्म कर रही है, तो हम काउंटर मेजर्स लेंगे अगर आप जो है इस डिमांड को नहीं हटाते हो तो। ठीक है, तो ये पहले से इशू चलता आ रहा है, लेकिन अब आरबीआई ने इस पर एक्शन ले लिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला था कि एक्शन इतना स्ट्रिक्ट मत लो, लेकिन फिर भी आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। ठीक है, तो ये जो है पेमेंट सिस्टम जो है इंडिया में कैसे रेगुलेट किया जाता है, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट, पीएसएस एक्ट जो है 2007 का, वो इसको रेगुलेट करता है। और उसके तहत, उस एक्ट के तहत जो है आरबीआई जो है वो एम्पावर्ड है कि वो मास्टर कार्ड, वीज़ा, एनपीसीआई जो रुपए है, इन सब के जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, इन सबको जो है वो रेगुलेट और सुपरवाइज करेगा, ताकि कस्टमर्स के जो है इंटरेस्ट को सिक्योर रखा जा सके। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, curbs on foreign card firms. So you may have heard on news channels that Mastercard has been barred from issuing new cards or onboarding new customers because they have failed to comply with the data localization demand, or uh, if to speak in a layman term, the RBI had asked these companies in 2018 that they should have their servers in India and they should store the data of of the payment, or their payment data of Indians in India only. They have to relocate their servers dealing with the payment data of Indians to India only. Okay, so many of these companies, they have failed to comply with that. In April 2021, American Express and Diners Club, they were banned. They were barred from issuing new cards because of the same reason. Now the same action has been taken against Mastercard also. Okay, so what do the RBI guidelines say about these? What did the RBI guidelines say about it? So in 2018, RBI issued guidelines that all the data related to the payments of Indians, they have to be stored in a system only in India. Okay, so it also mandated that these companies who are relocating these servers to India or for data storage purpose, they will have to compulsorily conduct a security system or audit, so that the servers can be ensured that they are safe and the payment data of the customers in India are safe. So these companies would have to appoint a cert-in empaneled auditor. So cert-in, you know that cert-in is the nodal agency of cybersecurity in India. So any auditor which is certified by cert
they certain these companies can appoint them and get their systems audited, and they will have to report they would have to submit the compliance report to RBI regarding that. And if they fail to do so, if they fail to comply with these two conditions, the first one is getting data localization, the second one is getting the systems audited, then RBI can take action against them. Okay, so these companies have resisted this move. They did not want to comply with these data localization terms. They did not relocate their data to India. That's why RBI has taken action, and they are barred from issuing new cards or new onboarding new customers. Okay, so why these companies are not complying it? Because they're saying that they currently have a centralized database, let's say in America, and if they have to relocate it to India, then it will be very costly for them. And after they relocate it to India, similar demands will be made by other countries also. So it will escalate their cost, and it will be very expensive for them to maintain this business as a viable business. Okay, and they are also upset that domestic payment company such as you know that RuPay, they are also pushing the government that there should be data storage in country only, and data localization norms should apply. That's why these MasterCard and Visa are saying that we are being deliberately discriminated. And they have pushed the US government also that this US government should ask Indian government to not push for these data localization rules. In fact, during the Trump presidency, he even threatened Indian government that they will if the Indian government does not take these rules back, then then their administration will retaliate with similar some trade measures. Okay, so how this payment systems is regulated in India? It is regulated via Payment and Settlements Act 2007, under which RBI is empowered to take action against these payment system operators, and RBI is this authority for regulating and supervisioning of payment systems in India. Okay, so now let us see the next topic, which is draft bill for trafficking in persons 2021. तो अभी हमने ये आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही किया, आई थिंक 6 जुलाई को हमने इसको कवर किया था इस टॉपिक को. तो अब इसको ये क्यों न्यूज़ में आ गया है? क्योंकि इस पे कुछ कंसर्न्स आ गए हैं. ये ड्राफ्ट बिल जो गवर्नमेंट ने निकाला, अब ये पार्लियामेंट में पेश होने वाला है. ठीक है, आज से पार्लियामेंट ओपन हो रही है, तो इसमें इसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको पेश करेंगे पार्लियामेंट में. तो कुछ लोगों ने इस पर कंसर्न्स दिखाए हैं. पहले बिल देखते हैं क्या है, फिर कंसर्न्स भी देखते हैं क्या है. ठीक है, तो बैकग्राउंड तो इसका ये है कि जो ट्रैफिकिंग होती है पर लोगों की, आपको पता है विमेन की या चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग की जाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इवन इंट्रा कंट्री भी की जाती है. इनमें ट्रेड किया जाता है लोगों में, फ्लैश ट्रेड होता है या फिर बच्चों का ट्रेड किया जाता है. ठीक है, तो उसको रोकने के लिए जो ये बिल लाया गया है. ठीक है, तो ये बिल जो है जितने भी सिटीजन्स हैं जो इंडिया में के अंदर रह रहे हैं या बाहर रहते हैं इंडिया के, और जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो अगर इंडिया या फिर स्टेटलेस पर्सन अगर जब वो क्राइम इंडिया में कर रहे हैं तो उनके ऊपर ये बिल लागू होगा. ठीक है, इसके अंदर डिफेंस पर्सोनल और गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है. ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन भी बहुत ब्रॉड दी गई है. जैसे एक्सप्लॉयटेशन को बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी से डिफाइन किया गया है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी, किसी भी तरह की फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर, बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है एक्सप्लॉयटेशन की इस बिल के हिसाब से. ठीक है, और विमेन एंड चिल्ड्रन के खिलाफ जो विमेन एंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पिछला जो ट्रैफिकिंग बिल था उसको रिप्लेस करते हुए अब उसके अलावा जो है ट्रांसजेंडर्स और किसी भी एनी पर्सन, मतलब ओपन कर दिया ये क्राइटेरिया कि एनी पर्सन जो भी विक्टिम हो सकता है ट्रैफिकिंग का, उन सब के ऊपर भी ये बिल लागू होगा, उन सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, सो पेनल्टी के प्रोविजंस देखो. प्रॉपर्टी अगर कोई किसी ने ट्रैफिकिंग से कमाई है तो उसकी प्रॉपर्टी फोर्टफीट कर ली जाएगी, और उसके ऊपर जो है जैसे 7 साल की जेल जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इवन डेथ पेनल्टी तक भी जो है वो इसके अंदर मांगी गई है कि डेथ पेनल्टी भी हो सकती है किसी न किसी केस में. ठीक है, तो वो आप पढ़ लेना, इसमें हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था. अब इश्यूज क्या आ रहे हैं इसमें? सबसे पहला तो ये कहा जा रहा है कि एनआईए को इसकी नोडल एजेंसी बना दिया. एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और कोऑर्डिनेट करेगी, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि एनआईए जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेगी, कैसे इंटेलिजेंस गैदर करेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल्स के ऊपर जनरली यूनिट्स जो होते हैं वो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. तो एनआईए उनसे इंफॉर्मेशन कैसे लेगी, तो इसके बारे में कोई खास बताया नहीं हुआ है. और जो रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे जो हैं जो ये विक्टिम्स होंगे जो ट्रैफिकिंग के, उनको कैसे बचाया जाएगा, इसके ऊपर भी कोई प्रोटोकॉल्स जो है वो नहीं बनाए गए हैं इस बिल में. ठीक है, फिर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताया गया है, और
सेक्स वर्क को जो है वो ट्रैफिकिंग से अलग करके दिखाया गया है, ठीक है। तो कुछ जो लोग हैं जो जो प्रो मतलब कहते थे कि हाँ जो सेक्स वर्क है उसको लीगलाइज कर दो, वो तो इससे खुश हैं कि हाँ जो सेक्स वर्क है उसको अलग कर दिया गया, उसको अब ट्रैफिकिंग नहीं माना जा रहा है। लेकिन कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जो कहते थे कि सेक्सुअल जो वर्कर्स हैं वो भी जो हैं, सेक्स वर्कर्स जो हैं वो भी जो हैं वो ट्रैफिकिंग के ही विक्टिम है, तो उनको इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। और विक्टिम्स को बचा लेना वो तो ठीक है, लेकिन उनकी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन कैसे की जाएगी दोबारा, तो उसके ऊपर भी ये बिल में कोई खास प्रोविजंस नहीं है। तो ये इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल टू द पार्लियामेंट। ओके, सो नाउ let us see this topic in English. Draft bill for trafficking in persons 2021. So we have discussed all this bill already 2 weeks back, okay, I think on 6th July. So this bill was introduced by Ministry of Women and Child Welfare, and this ministry has asked for suggestions from people, and now the government wants to introduce this bill to the parliament, which the session of which is starting from today, the monsoon session of parliament. And let us see what are the issues which are raised by certain sections of society, and before seeing those issues we have to see what is this bill exactly. Okay, so this bill is applicable to all citizens inside as well as outside India, and any foreign national or a stateless person who has committed this act of trafficking in the territory of India, and he or she was resident of India at that particular time. Okay, so the scope of the bill has been enlarged to capture defense personnel, government servants, doctors, and paramedical staff also. So anyone who is in a position of authority and he or she is involved in trafficking of people, then this bill will be applicable to that person. Okay, so this bill has also enlarged the definition of the term exploitation. So now exploitation includes prostitution, sexual exploitation, slavery, etc. So many terms have been amalgamated to this term of exploitation. It has been enlarged so that the scope of the bill gets enlarged also. Okay, so the earlier legislations, they were only applicable to women and child trafficking. Now the victims have been extended, the victims under this bill have been extended to transgenders also, and it has also kept this term victim open ended by saying that it will be applicable to any person who may be a victim of trafficking. Okay, so this is a good thing. Okay, sometimes male are also trafficked, okay, in some cases, or people with some mental health issues, they are also trafficked, so this will also be providing them protection. Okay, so there are certain penal provisions. Many penal provisions are here. So the first one is property seizure. Okay, so property will be forfeited in case that property is earned from the income of trafficking. Okay, then the government will forfeit that property. So there are certain criteria for uh, imprisonment, like from ranging from 7 years to 10 years, or in some cases, in some rare cases, death penalty is also sought from this bill. Okay, so death penalty will be applicable in this bill also, and it will be, of course, valid only in case of very rare in rare cases basically. Okay, so what are the issues, why some people are skeptical about this bill? So the first skepticism about this bill is that National Investigation Agency, NIA, uh, has been accorded the investigation and coordination agency status, but it is not yet clear how the NIA will gather information and intelligence through anti-human trafficking units, which will be located at district and state level. So how this coordination will happen, how this NIA will gather the information from them, which from these units which are basically under the state administration, that is not yet available, that is not yet clear. Okay, so this bill is also silent on rescue protocols. So the victims which will be rescued under this bill, how they will be rescued. Okay, so there is no clearly defined protocols under this bill, so that's why people are skeptical about it. And there are two sections of peoples. One is those
one is that section which says that sex workers are not always trafficked. Some are also those who are voluntarily doing it. So that's why you cannot equate every sex worker as a victim of trafficking. And there are certain sections who say that every sex worker is a victim of trafficking. So now this bill has defined human trafficking as an organized crime, and it has moved away from the traditional a wisdom that all sex workers are trafficking victims. So now those people who were happy with the earlier definition, they are now skeptical that this will differentiate between sex worker and human trafficking. Then that's why their sentiments of the old people will be hurt. Okay, so there is also a concern about community-based rehabilitation. So this bill is not this bill is silent about that how you will be all those victims you will be rescuing after this investigation and investigation by the NIA. How will you rehabilitate them through a community-based rehabilitation mechanism? Okay, so there is no such mechanism which is available in this bill at this moment. Okay, so now let us see the next topic, which is National Mission for Clean Ganga. तो 36th एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है नेशनल NMCG की, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव किए हैं 6 रिवर्स के ऊपर उत्तराखंड में, ताकि वो उनको रिजुविनेशन की जा सके. तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है? ये इम्प्लीमेंटेशन विंग है जो हमारा नेशनल गंगा काउंसिल का. ठीक है, तो नेशनल गंगा काउंसिल को पहले NRGBA कहते थे ना, नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा. 2016 में इसको चेंज करके नेशनल गंगा काउंसिल कर दिया गया. ठीक है, जिसको PM हेड करते हैं. तो NMCG जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन विंग है जो नेशनल गंगा काउंसिल की. तो इसको जो है वो 2011 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह से. इसमें 2 टियर मैनेजमेंट है, एक होता है गवर्निंग काउंसिल और एक होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी. तो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग ने जो है वो अप्रूव कर दिए हैं कुछ मिशंस. और इसका मोटिव क्या है? पॉल्यूशन और रिजुविनेशन को रोकना और रिजुविनेशन को बढ़ाना गंगा रिवर के आसपास के एरिया को, गंगा रिवर को. ठीक है, तो नेशनल गंगा काउंसिल जो है जो उसने रिप्लेस किया NRGBA को. ठीक है, 2016 में अब के बाद से वो नेशनल गंगा काउंसिल बन गया है. ठीक है, उसको चेयर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास पॉल्यूशन को रोकने की, रिजुविनेशन करने की रिवर गंगा बेसिन को और उसकी ट्रिब्यूटरीज को. ठीक है, सो नमामि गंगे प्रोग्राम ये भी देख लेते हैं जब हम ये देख ही रहे हैं तो. ठीक है, तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो मई 2015 में जो है उसको स्टार्ट किया गया था, और गंगा रिवर को क्लीन और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था ये मिशन. और इसमें 20,000 करोड़ का जो है वो बजट था. इसको रिसेंटली बढ़ाया भी गया है, 5 साल के लिए इनिशियली जो है वो 20,000 करोड़ का बजट था. और इसमें जो है जो भी लोग रिवर बैंक्स पे रहते हैं गंगा रिवर के, उनको इसमें इंक्लूड करने की बात की थी. ठीक है, अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स और जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और जो ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. इसको एक जो है कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? हमारा NMCG. ठीक है, जो NMCG जो हमारी इंप्लीमेंटेशन विंग है यही इसको इंप्लीमेंट कर रही है इस मिशन को भी. ठीक है, इसके अंदर 3 टियर मैकेनिज्म है, जिसमें नेशनल लेवल पर जो है उनको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट लेवल पर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनको हेड करते हैं, और देखते हैं कि जो है प्रोग्राम जो है वो कैसे फंक्शन कर रहा है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. नेशनल मिशन फॉर Clean Ganga. So National Mission for Clean Ganga, in its 36th Executive Committee meeting, it has approved new projects for rejuvenation of 6 rivers in Uttarakhand, and this NMCG is basically the implementation wing of National Ganga Council or the National Namami Gange program. Okay, so all the projects which are how this river Ganga will be cleaned, this National Ganga Council will decide that, and the projects will be implemented by the National Mission for Clean Ganga. Okay, so earlier this National Ganga Council was called as NRGBA, National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga, but in 2016 it was renamed as National Ganga Council. So this National Mission for Clean Ganga was established as a registered society in 2011, and it has a 2-tier mechanism, management structure, and which comprises of governing council and executive committee. So the 36th executive committee has approved some projects for 6 rivers in Uttarakhand, and this NMCG basically aims to ensure that
pollution is controlled and rejuvenation of the river Ganga happens in a sustainable manner. Okay, so this National Ganga Council, it is headed by the Prime Minister. It replaced the erstwhile NRGBA, and it has been given the overall responsibility for superintendence of pollution prevention and rejuvenation of Ganga River basin, and of course all its tributaries. So this Namami Gange program, it was launched in May 2015, and it aims to clean and protect the Ganga River. It will focus on pollution abatement interventions. It had a budget outlay of 20,000 crores for 5 years since 2015, and it also involves the community participation component by involving people who are living on the banks of the river. It also involves urban local bodies and panchayati raj institutions, that is the grassroots level institutions. This program is being implemented by the National Mission for Clean Ganga, NMCG, which has conducted this meeting recently. And this Namami Gange program will be supervised via 3-tier mechanism. The first one is at the national level, which will be headed by the cabinet secretary. The second one is at state level, which is headed by the chief secretary of the state, and the district level one is headed by the district magistrate. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.